Hello everyone, this is Namrata Rana, your chemistry educator, and welcome back to our channel Chem with NR. See, I have seen many students complaining about inorganic chemistry. They say कि इसमें तो बहुत cramming part है, इसमें तो you need to remember कि क्या structure है, क्या shape है, हर किसी compound का याद करना पड़ेगा, ऐसे ऐसी चीजें, right? So trust me, you only need two things. See, the inorganic part, it all revolves around the periodic table, right? What I mean to say is you should have a general idea about the periodic table कि कोई atom किस group में present है. Why? Because जिस ग्रुप में भी प्रेजेंट होगा यू विल हैव एन आइडिया कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, राइट? कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हमें नॉलेज आ जाए उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स दिस मैजिक टेबल राइट इन फ्रंट ऑफ यू. सिर्फ दो चीजें हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा दिस मैजिक टेबल. इसके बाद ट्रस्ट मी, तुम्हें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जहां तुम उसकी हाइब्रिडाइजेशन, जहां तुम उसकी ज्योमेट्री, जहां तुम उसकी शेप ना बता पाओ, राइट? सो कुछ क्रैम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट है, योर पीरियोडिक टेबल एंड दिस मैजिक टेबल. All these two videos I have already discussed in our previous lectures. और अगर आपने नहीं देखी है, I'll add somewhere in the description box. Please do watch it. और उसके बाद फिर क्वेश्चन ट्राई करो. See what what student do is कि सीधा डायरेक्ट आंसर चाहिए, राइट? बट उससे पहले जो थ्योरी तुम्हें इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट उतना लेके आओ, उसके बाद एक्सपेक्ट करो कि हाँ यू विल डू इट. लेट्स सी आफ्टर लर्निंग दिस पीरियोडिक टेबल कि हाउ टू यूज दिस पीरियोडिक टेबल. इसके लिए विल जस्ट डू सम क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और क्वेश्चन के साथ साथ आई विल टेल यू कि इसका यूज क्या है टेबल का. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फाइंड आउट द ज्योमेट्री ऑफ H2O. हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की उसकी ज्योमेट्री भी, उसकी शेप भी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी सब निकल जाएगा उसी एक टेबल से, राइट? सो H2O, सबसे पहले यू नीड टू सी कि व्हाट इज द सेंट्रल एटम. अब देखो, वाटर है, वाटर में यू हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम. तो एक सेंटर होगा, उसके अराउंड दूसरे एटम्स आएंगे. तो सेंटर एटम क्या हुआ? ऑक्सीजन, राइट? ठीक है. आफ्टर ऑक्सीजन यू नीड टू फाइंड आउट, पहले जब सेंट्रल एटम निकल गया, दूसरी चीज तुम्हें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए कि उसके पास, सेंट्रल एटम के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. ये इंफॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, राइट? सो ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 का है, ग्रुप नंबर 16 का है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो सबसे पहले इसका ऑक्सीजन बनाया, उसके बाद 1 2 3 4 and 5 and 6 we have shown the Lewis dot structure of ऑक्सीजन एटम. ठीक है. आफ्टर दिस बस इतना ही काम है, उसके बाद सीधा कहाँ जाओ? अपने मैजिक टेबल पे जाओ, राइट? सो आफ्टर यू हैव डिनोटेड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द एटम. अब ये देखो इसके पास कितने अराउंड एटम थे. ठीक है. तो वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम. 2 हाइड्रोजन एटम है तो वो कैसे लगे होंगे? एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, कहीं भी लगा दो, एनीवेयर. ठीक है. बस तुम्हें क्या देखना है कि हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर एंड हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर. अब इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन यू हैव H2O. तो H2O में जो तुम्हारे पास दो दो OH एंड OH बॉन्ड है, तो दीज टू आर बॉन्ड पेयर. तो टोटल बॉन्ड पेयर 2. अब जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो तुम्हारे लोन पेयर बन गए. सो 1 लोन पेयर, this one, and another lone pair, this one. So total lone pairs are 2, right? 2 lone pairs and 2 bond pairs. अब टेबल देखो, यहाँ पे फर्स्ट चीज क्या है? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स. तो किस कैटेगरी में फॉल करेगा? वी हैव टोटल लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर इक्वल टू 4. सो फोर्थ मतलब ये वाली कैटेगरी, राइट? अब जितनी भी इंफॉर्मेशन फोर्थ रो में दी हुई है तुम्हें, वो तुम्हारी इसकी इंफॉर्मेशन होगी. फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन H2O में 4 आया. सो एक चीज समझ आ गई क्या? कि अगर तुमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछिए, इफ यू आर आस्क्ड अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ इज फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन. सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2O
ऑक्सीजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई, sp3। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन पता चली, यू कैन फाइंड आउट दी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, करेक्ट। टेट्राहेड्रल को यू कैन डिनोट बाय TD ऑल्सो, टेट्राहेड्रल, राइट। अब मेन इंपॉर्टेंट बात, दैट इज अबाउट द शेप। यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट द शेप ऑफ वाटर। अब देखो, ये 1 और 2 का क्या मतलब था टेबल में, 1 एंड 2, इनका मतलब है लोन पेयर्स। इनका मतलब है कितने लोन पेयर्स हैं उसके पास। फॉर एग्जाम्पल इन H2O वी कैन सी वी हैव 2 लोन पेयर्स। तो जहां पे भी लोन पेयर आए, कितने नंबर आए वो तुम्हें शेप बताएगा। तो सेकेंड नंबर पे मतलब वी हैव 2 लोन पेयर्स, सो शेप इज, last is shape is your V shape, or you can say bent shape, or you can say angular shape। तीनों में से एक ही मतलब है, करेक्ट। दिस इज डन। तो H2O का तुमने सब कुछ निकाल लिया। हाउ टू यूज दिस टेबल, सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट द सेंट्रल एटम, देन यू नीड टू फाइंड आउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, थर्ड इज टोटल बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। जहां पे भी टोटल आ गया, तुम्हें रो पता चल जाएगी कि इस रो में जाना है या इस रो में जाना है या इस रो में जाना है, करेक्ट। आफ्टर द रो यू कैन फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन, देन ज्योमेट्री, एंड बाय सीइंग द लोन पेयर यू कैन फाइंड आउट द शेप। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल ले लो, बट रिमेंबर इट शुड बी example in which only covalent bonds are required. This is not for the ionic compounds, remember, this is not for the ionic compounds. Okay, now let me give you another example. Let's take another example. second let's take ammonia NH3, right। सबसे पहले यू नीड फाइंड आउट दी सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन हुआ, नाइट्रोजन बीच में है और 3 उसके अराउंड हाइड्रोजन लगे होंगे, तो सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू 15 ग्रुप, राइट। 15 ग्रुप मीन्स इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज योर नाइट्रोजन, दिस इज 1 2 3 4 and 5, correct। 5 valence electrons. Now how many hydrogens are attached, we have 3 hydrogen, put it anywhere, because तुम्हें तो सिर्फ total number of lone pair and bond pair से मतलब है, ठीक है। So in this we have 3 bond pairs, 1 2 and 3, 3 तो bonds बने हैं और एक lone pair बना है, तो 3 + 1 is 4, फोर्थ है तो कहाँ आया, दोबारा से कहाँ आया, टेट्राहेड्रल। बट अब की बार क्या हुआ, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर, only 1 lone pair। how many bond pairs are there, we have 3 bond pairs, so total कितने हुए, total pairs 4। जैसे ही 4 आया, 4 में you need to find out the शेप के लिए जस्ट सी लोन पेयर कितने हैं, 1। अगर 1 लोन पेयर है तो शेप क्या होगी, ट्राइगोनल, पिरामिडल। सो सब कुछ पता चल गया। इफ आई आस्क यू अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया, इट इज sp3। if I talk about the tell me the geometry of ammonia, it is tetrahedral and shape is trigonal, plane, pyramidal, easy, right। I hope you are getting the questions। तो इस तरह से you need to find out the geometry and shape। so moving towards the next example, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल। नाउ लेट्स टेक समथिंग फ्रॉम आवर नोबल गैसेस में लेट्स टेक XeF2, राइट। लेट्स टेक थर्ड एग्जाम्पल इज आर XeF2, xenon with 2 fluorines। now central atom is xenon, okay। xenon group number 18 means 8 electrons, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, correct। now how many fluorines are attached, only 2 fluorines, 1 and 2। so how many lone pair and bond pairs are there, we have lone pairs 1 2 and 3, so 3 lone pairs, and bond pairs we have 2 bond pairs where
one this, and another is this. So total bonds are 5. So for 5, you need to see this category. This category has hybridization sp3. So hybridization of xenon is sp3d. sp3d, right? Now geometry is trigonal via pyramidal. Corresponding geometry is trigonal via pyramid. Okay, now shape will be seen by number of lone pairs. So how many lone pairs are there? 1, 2, and 3. 3 lone pairs means third shape. Third shape is linear shape. So what is the shape of XeF2? It is linear. I hope this is clear, right? So दिखेगा कैसा? Trigonal via pyramidal. We have already discussed कि shapes दिखती कैसी हैं उसमें. Trigonal means you have 1, 2, and 3 atoms in a plane here. Another is here and here. So central atom sits here, and you have total number of 5 bond pairs or lone pairs. So linear means this F2 will sit here, F and F. Now 3 parts that would be occupied by 3 lone pairs, 1, 2, and 3. This is the shape. Okay, if you talk about the geometry, it is trigonal via pyramidal. You can show it like this or not, depends, right? I hope I'm clear. This is your required shape and geometry of XeF2. Now moving forward, let's discuss another example. You can take as many examples. सिर्फ एक ट्रिक पता चल गई है तुम्हें. Now let's take something from, let's see, another example. Let's take another XeF4. This time we have 4 atoms, right? XeF4. So central atom, xenon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. How many fluorines are attached? 1, 2, 3, and 4. So how many total number of bond pair? 4 and 2 lone pairs. So it is 6, right? I'm writing it here. Total pairs are 6. So 6 will come in the category of hybridization sp3d2. sp3d2 means geometry is octahedral, right? Now talking about the shape as there are 2 lone pairs, so corresponding shape is square planar. Now this looks like your if I talk about the geometry, so this is Xe, and you have 4 fluorines like this, and 2 lone pairs should be at the maximum distance from each other for the minimum repulsion. That is the required postulates we have already done of Vsepr theory. So this is the shape of your XeF2 compound. I hope this is clear. So you can practice as many questions as you can. So moving on to the next question, let's see the questions which have double bonds now. According to the postulates, double bond is considered to be like a single bond only, right? So single bond. Okay, let's take example of CO2. Okay, carbon dioxide. Now central atom is carbon, right? How many valence electrons are there? 4 valence electron. Now oxygen and carbon forms only double bond. Everybody knows that oxygen only forms double bonds with carbon. Why? Because it has 6 electrons. It has to fulfill its octet, right? It has to complete its octet. So it need to form only 2 bonds only, right? Similarly, here also oxygen. Now, if you see clearly, if I consider this double bond to be single bond, and this double bond also to be a single bond. So how many bond pairs are there? We have total 2 bond pairs, right? For 2 bond pair, what is the hybridization? It is sp hybridization. So carbon has sp hybridization. And if I talk about geometry,
also the shape which is same and that is equal to your linear, right? So carbon dioxide is actually linear in shape like this. It will form 180 degree, okay, with two oxygen atom at opposite to each other, okay. Second is, let us consider SO2. SO2. Now sulfur is the central atom. Sulfur belongs to oxygen family only. Oxygen belongs to 16 group. So it has 1, 2, 3, 4, 5 and 6 valence electron. Now this valence electron, we have 2 oxygen around this sulfur. So likewise, oxygen will always form 2 bonds. Now if you count the total number of pairs, 1 lone pair and 2 bond pairs. Remember, this double bond is considered to be a single bond, only one this and another this. So lone pair 1 and bond pair 2. So 3, total is 3. For 3, everybody knows hybridization is sp2. Now hybridization, then geometry. Geometry is trigonal planar. I hope now table is learned. Okay, टेबल को सिर्फ मेमोराइज कर लो और जितनी बार उसको तुम रिपीट करोगे इजी बनता जाएगा. ट्राइगोनल प्लेनर. नाउ ट्राइगोनल प्लेनर, उसमें शेप्स थी. हाँ थी, एक ही शेप थी. कब? जब एक लोन पेयर हो. सो ओनली वन लोन पेयर इज देयर. सो शेप इज V shape. Okay, this is geometry and this is shape. Okay, moving on the next question. Moving forward on the next question, we have another type of question. Let us take ions now. I'm not talking about ionic bonds. I'm talking about the ions. Okay, suppose you are given XeF5 positive, right? XeF5 positive. Now this positive charge means you have removed one electron from the central atom. And if there is negative charge, matlab you have added one electron, right? Now xenon has 8 electron in its valence shell. Okay, valence electron is 8. Now if we have removed one, so leftover is 7 only. So now this time xenon has only 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 electron around it. Okay, how many bond pairs are formed? 1, 2, 3, 4 and 5. 5 fluorines are around the xenon atom and 1 lone pair is there. So total bond pair 5 and lone pair 1. So total is 6. For 6, everybody knows hybridization is sp3d2. Total 6. 1, 3 and 2. Count out to be 6. Okay. Now sp3d2 will give you octahedral geometry. Right. Now if I talk about this is your geometry. And if I talk about the shape will come out to be 1. 1 means it will have square pyramidal shape. Square pyramidal shape. Okay. Now let's take another example. These are all previous year questions which have been asked in different exams. Okay. Let me take an example of negative ion now. F4, or take it as F5 with a negative charge. Okay. Now silicon. Silicon comes from the family of carbon, right? Carbon has 4 electron. Therefore, silicon also have 4 electron in its valence shell. Valence electron are 4. But a negative sign means you have added 1 electron. 1 extra electron is there. But this time, silicon will have 1, 2, 3, 4, 5 electrons. Right? Number of valence electron would be 5 because of the negative charge. Okay. Now, how many fluorine atoms are attached to it? 5 only. How many? 5 only. So means in this question shape भी वही होगी और geometry भी वही होगी. Am I correct? क्योंकि जब भी शेप आती है तब वो लोन पेयर के हिसाब से आएगी. जब भी ज्योमेट्री आ रही है वो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों की तरफ से आएगी. राइट. सो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर? बॉन्ड पेयर 5 बॉन्ड पेयर. लोन पेयर
zero lone pair. So total bond 5. Total bond 5 means hybridization is sp3d, right? Hybridization sp3d means it has trigonal biapyramidal geometry. Geometry is trigonal biapyramidal. अब trigonal biapyramidal में we had 3 shapes, seesaw, T-shape and linear, but 1, 2, 3 lone pairs के लिए. Here there is no lone pair, so tetrahedral trigonal biapyramidal ही geometry है, trigonal biapyramidal ही shape है. Okay, shape plus geometry both are TBP only. Correct? Next, let us take another example, which is your let's take AsF4 positive. As is arsenic, right? Arsenic comes from the group number 15, right? Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. So it has 5 valence electron, but a positive charge means you have removed 1 electron. How many electrons are left? Arsenic will have only 4 electron this time. 4 electron means all 4 are bonded to fluorine. 1, 2, 3 and 4, right? 4 total bond pair 4. Total bond pair 4 means hybridization is sp3, right? sp3 with no lone pair, so geometry is also tetrahedral and shape is also tetrahedral. Both the geometry also plus shape also. So that's all for your Vsepr theory. अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुम ना कर. So we have discussed around 10 questions of Vsepr theory. It's of the chemical bonding. We have find out the hybridization also, geometry also and shape also. Now I hope आपको वो table use करना आ गया है. This table, your magic table. Okay. कैसे use करना है? You need to find out the central atom first, number of valence electron, then move to the lone pair and bond pair. जो भी lone pair bond pair का row है, just see कि आगे hybridization, geometry और shape क्या है. Right? I hope this is clear. Thank you very much.